This is our first meeting on Zoom, and we, as of now, first of all, will start with the very basics. Our first priority is in respect to understanding where we are heading to, right? Language will not be a bar. If something is not able to be perceived by you or is not really coming into your senses, then you can ask either in Hindi or in English, whatever is convenient to you. Vipin, prior to that, just let me know I am getting your video as the biggest one. Why not mine? Is there any difficulty with it? Hello? Ha. All right. Now we can go ahead. So, the first and the foremost thing which we will discuss is unmute yourself, and I will ask all of you the very basic things first. All of you are unmute. So tell one by one. Sunny will tell me first of all that whether, Sunny, you have been willing to go for judicial side or our preparation should confine on the advocacy. First priority of ours will be definitely judiciary, but I will try to cover both the aspects so that it will be easy for you all. Sunny, can you hear me? Hello? Sunny, you are able to hear me? Vipin, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. All right. Ha, Kirti, can you hear me? Yeah, I can. Okay. So, prior to going into all those details, first of all, we will have a little bit of concentration. If we go by the aspects of judiciary, we will concentrate mainly on 6 states, right, which have most of the course as common, right? They will be Delhi, Bihar, Rajasthan, MP, and Haryana, UP, right? And there are basically 8 subjects which will cover most of the law and the numbers to be tracked in the exam, be it PT, mains, or somewhere else, right? Including the interview. They will be the constitution. The biggest one will be our constitution, then CPC, CRPC, partnership, specific relief act, contract, and evidence. All right. So we will start with first and foremost thing, that will be the CPC. So can any one of you tell me which was the first CPC which was enacted for the purpose of British India? Because at that time India was not there, it was British India. Can anyone tell? Just raise your hands. And Vipin Babu, don't go into the books now. You should be prepared before coming to the meeting. Okay. Anybody? Yeah, Sunny. I am not able to listen your voice. Anybody else? Ha, Sunny, now I can hear you. Yeah, Sunny. Sir, there was no civil procedure as consolidated one before this. Before which? And, Before this act. 1908, right? Yes. No, Yes, sir. mute your videos. I will let you know. It's not so. Basically, the first enacted code about civil procedure was way back in 1859, when the second law commission for British India has enacted Code of Civil Procedure 1859, and this was a consolidated code, and the object of which was
basically to consolidate and amend the civil laws, especially in respect to major cities, which were Madras, Bengal. These were all presidency towns. I'm not coming to what presidency town is named as or why it is so called. We will discuss it later. But major presidency towns including Madras, Bengal, Calcutta, and Northwestern Province, which as of now covers Bihar, Uttar Pradesh, some part of Rajasthan, right? It was entirely called as Northern Western Province. So first CPC was enacted for them, and it was a consolidated code. And the first major amendment after it were done, but it was almost repealed by another code, which was CPC 1877, right? Later on, major part of it was amended. Around 130 sections of 1877 Act were amended, and 1879 code came into effect. Thereafter, ultimately 1882, and the last by which we are still governed, though various repealing sections and amendments have been there, is our present code of civil procedure, that is 1908, right? Now we have also to see that the CPC which is prevailing as of today, which is Code of Civil Procedure 1908, was also amended time to time, but the major amendments have been 5 times. You may note down or jot down it just for the experience purpose. Nobody is going to ask these things in the examination, but being a person of law, you should know the major amendments in the major acts. So the one of the major thing which has amended the CPC has been in way back in 1941, right? Thereafter, another aspect came in 1963 when the Limitation Act was introduced. All right. If anybody has any confusion, may raise his hand, his or her, whatsoever, right? Thereafter, further major amendments came in 1999 and 2002, and the last amendment, major amendment, are in, can anybody tell? In 2015, when the Commercial Court Act was introduced, right? And can anybody of you tell me which is that landmark judgment related to 1999 or 2002 amendment of CPCs? Write down, it was Salem Advocates Bar Association case. Anybody and everybody of you should always be apprised and should always be acquainted with the most important landmark judgments, out of which it is one. Do you know why it is called Salem Advocate Bar Association case? No, sir. No, sir. Anybody? You may unmute your videos and may answer me, because basically it's not a lecture series, it is more or less interactive session by which you can always say your doubts. Yeah, Sunny? No, sir, no idea about this. All right. Basically, Salem is a place in Tamil Nadu. It's a district near Kochi. The Bar Association, just as we call our Tisdari Bar Association, Patiala House Bar Association, Salem is also a place whose Bar Association, which is known as Salem Advocates Bar Association in Tamil Nadu, has challenged this amendments being contrary to some very specific reasons, including the violation of some fundamental characters, right? So we will discuss Salem Advocate Bar Association later on, but that was the case in which
1999 amendments and 2002 amendments, what were there, special amendments like Order 6, Rule 17, various other things were challenged in detail and discussed, and the Honorable Supreme Court has struck down their challenges, didn't accede to them by reasoning, with different reasoning for different provisions, right? We will discuss. Yeah, anything? Sorry. Oh, No, no. all right. Raise your hand only when there is a question, otherwise it will be a confusing situation, right? So now we have a broad outline about our Code of Civil Procedure, which is the present Code of Civil Procedure, how it was introduced, why I will answer later, and thereafter when it was in symmetrical ways amended time to time, right? So now anybody of you has the CPC, latest Bear Act CPC? I have, but I will get it. Yes. Just a latest- moment, I'll get it. I just get It's it. not the time to get it. You go and get it. Vipin, are you having it? Sir, it's 2018. Ha. So first of all, start from the very first line of the Bear Act. What did it say? The Code of Civil Procedure 1908, 5th of 1908. Ha. The next question to be understood is why they have written, what is this 5 of 1908? What does it mean? It is the 5th Act of 1908. Yeah, because whenever the legislature enacts anything, it is done in serial manner, so that there a record can be kept in respect to how many acts were floated before the floor of legislature and how many were passed. So this was the serial number 5 for that particular year. So it is called at 5 of 108. Further, go on. 21st of March 1908. What An is act to consolidate. It's a date given on the right so side of the Bear Act. dates are not so relevant as far as this particular CPC is concerned, for the very reason that it has been a very old act. Now it is irrelevant when it was commenced or when it has started. But the next question will be important. Read. An act to consolidate and amend the laws relating to the procedure of the Court of Civil Judicature. So the important words, what are the important words in this line? Consolidate and amend. Yeah. What does that mean? Consolidate and amend, meaning thereby, basically there are two scenarios where a act is introduced before the legislature. One is when we are making something on the very first time. We are introducing something, like recently POCSO was introduced in a field which was not covered by us either at all or with full wordings. So, but when there is already an act or acts available in that field, we need to introduce a new one, but we also want that the other act should be covered. Then we say that to consolidate, matlab ikhatta karna, right? So that the provisions which are gathering, which are here and there available, should be confined to one place. So this was the object to consolidate, meaning thereby it itself gives an answer to the query of what the position of Sunny in the start of the lecture was, that there was nothing like CPC otherwise. It gives the answer itself that there were the availability of the code, but it were in different scenarios or in name of different acts. So to consolidate all of them, सबको एक जगह इकट्ठा करने के लिए, right? If there is any difficulty in understanding my wordings, you may raise your hands. And further to amend, what can be amended? Anything which is already existing can only be amended, right? We cannot amend something which is not existing. It also gives us a signal that the unamended provisions were already available in respect to something of which is related to procedure of civil
code. Sunny, I don't think you are listening carefully. No, sir, I'm listening. Have one thing in mind, that you cannot do two things at a time. You cannot read and listen. If you are trying to read, or if you are trying to jot down, it is also as bad as something else. Don't try to write down everything. Simply, Yes. or don't try to read other book when you are trying to listen. Otherwise, you will be nowhere. Right? So consolidate and amend, meaning thereby whatever was available, it was to be consolidated at one go, at one place. And if something was not proper, it was to be amended. Both these things were to be done. Right? Next, padho. Whereas it is expedient to consolidate and amend the laws relating to the procedure of the Court of Civil Judicature, it is hereby enacted as follows. Yes. The important, tell me one more thing to me. Can others of you also able to hear what you are just reading out? Yes, I, sir. Yes. all right, okay, because I am not that tech savvy, I don't know how does this Zoom works or not. All right, so meaning there, when he is reading, when somebody is reading a provision, the others will also be able to hear it, right? Okay, so another word which comes to the light is judicature of civil. So they have made it very clear that this particular code will apply only and only for the purpose of civil jurisdiction. Right? Number one. Secondly, what is judicature? What do you mean by judicature? Can anyone say? What is judicature? Judicial structure? No. The courts which are of the civil natures. I am simply asking the answer about a word. What is judicature? Judicature is it's a broader term for whole law, civil law, I think. It's a synonym for jurisdiction, I believe. Civil. A little of both of you are correct. Judicature has come out from adjudication. There are basically two things. To adjudicate, and when something will be adjudicated, it will be adjudicated in a confined scenario, in a defined scenario. And the defined scenario means the jurisdiction itself, right? Meaning thereby, when it is defined that some code will act in a specified, dignified, entitled, declared area, right? It will be called its adjudicating area or judicature. Yeah, anything? Oh, all right. So now go on further. Okay, section 1, short title, commencement and extension. This act may be cited as the Code of Civil Procedure 1908. Just wait. This particular line involves three important words. What are those? Short title, extent, and commencement, right? So why these three words? These three words will usually be used for every act, because we have to give name to somebody. How we will call it, that is called short title, right? Every act should be called by something, by some name, that is short title, so that we can convey in our language to anybody. If we are moving an application, let us say we are moving an application in civil adjudication governed by the provisions of Code of Civil Procedure. Until unless we give it a name, how we will define it, how we will say, how we will write down that section 151 of what, right? So for that, short title is given. Second is extent, and third is commencement. Commencement means to start, to have a start, from where something will have its operation, from when it will become operative, right? So every act is prospective in nature, except that which is procedural. Let me tell you, substantive is always prospective, procedural law may be retrospective itself. But for the purpose of, because CPC is a procedural law, but even then, when the legislature enacts it, it has to tell a date that these provisions will apply
from such and such date or time onwards. That is called commencement. And what is an extent? What do you mean by extent? Anybody? Territorial jurisdiction. The area where this law would be applicable, the part of country or matlab the area where Both this the- law would be applicable. Both the things are correct, meaning thereby we have up to what reach, what is the reach of this act. In general scenario, you will have to say what is the reach of this act, up to what level it will affect, which are those persons will be affected, what are those codes on which it will be applied, what are the codes where it will not apply. In general scenario, that is called the extent, meaning thereby the authority of the act. Right? Further, padho aage. Point second, it shall come into force on the first day of January 1909. It That does not mean extends any to whole of influence. All right. Further. It extends to whole of India except the Hmm. state of Jammu Kashmir, Hmm. state of Nagaland and tribal areas, provided that the state government concerned may, by notification in the official gazette, Hmm. extend the provision of this code or any of them to the whole or part of the state of Nagaland or Hmm. such tribal areas Hmm. as the case may be, Hmm. with such supplemental, incidental, or consequential modifications as may be specified in the notification. Right. Explanation. Tell me one. Just wait. Tell me one thing. Okay. There have been made carved out two exceptions in clause 1, A and B. Has anything Yes. changed recently in this respect? Yes, sir. What? So Jammu and State of Kashmir Jammu- has been made the Union Territory of India. That means CPC applies over there. As well. But your answer is a little misplaced. Your answer is correct, but a little misplaced. Don't say that it has become union territory. Simply say that the special status of Jammu and Kashmir has been taken away. Yes. Because Okay. becoming union territory is the consequence of it. It is second step. The special status of the J&K has been taken away, due to which it will also apply, the CPC will also apply across Jammu and Kashmir now. Right? So Right. this goes. Next, when we are further saying, we are reading out that other state governments, what is that line? Read it out again. Provided Provided that that the state government Hmm. concerned may, Hmm. by notification in the official gazette, Yeah. and the provisions of this code or any of them Hmm. to the whole or part of the state of Nagaland Hmm. or such tribal areas, Hmm. as the case may be. Tell me one It's- thing. Why do I make you read it? Because there is a word state government. Who enacted this law? This was the central legislature. yes, But here we are using the word state. Why is it so? Because Hmm. in some states the laws could be different, the customs could be different over there, like revenue codes, revenue systems. No. Because State of the government has the power. State government has the power to extend or something, to make some changes, to extend it, to give. I don't. Maybe. maybe it is a don't waste the subject time. of concurrent list. Sorry. Don't waste the time like this by saying anything for the purpose of saying. Just see, when an exception has been carved out in the section itself, what they have done that these areas will be given liberty, right, not to apply it. When some liberty is given to somebody, he definitely can waive it. अगर मैं आपको लिबर्टी देता हूं कि जी आप ये काम करो या ना करो, तो आपकी मर्जी है, कल को आप चाहो अपना कष्ट बढ़ाना नहीं, मैं तो ये काम करूंगा. So when the jurisdiction itself has been vested to exempt some application over a state, then the state definitely has the right to waive his right. अपना अधिकार छोड़ने का अधिकार भी किसके पास होगा? जिसका अधिकार है. Right? Got it. Got it? Next. Further. And just wait.
one complete section will be read by one person, then another. Okay, let Okay. first be Let them- completed. It will not create a confusion, right? Continue. Vipin, continue. Okay. Okay, sir. Hmm. Explanation. In this clause, tribal areas means the territories which Hmm. immediately before the 21st day of January 1972 were Hmm. included in the tribal areas of Assam as Hmm. referred in the para 20 of the sixth schedule Hmm. to the constitution. Just Both points? wait. Yes. We Okay. these questions are not so relevant for the purpose of examination, but for becoming a good lawyer, you need to know all these basic things. Because when this CPC was enacted in 1908, there was no central legislature owned by us. We were slaves. We were British India. But when our constitution came into force, we were given separate powers. Our legislature was different. Our parliament was different. So we have become a union of states, including those Assam, Nagaland, and some others. So special provisions time to time were included. These are some special provisions which were time to time included. And when you read the BEER Act, you will find some very small 1, 2, 3, right? Yes. On the points, bullet points like 1, 2, 3 on those provisions. And on the footnote, you will note that the amendment, particular amendment was introduced at what time of. So in 1972, something was done. This is only that much relevant. Now come to directly to section 2. Sunny, read it. In this act, unless there is anything repugnant in the subject or context, code includes rules. Now, the important aspect. CPC has two basic parts. One is sections, another one is rules. So when they were defining the definitions itself, so they have to make it very clear that the sections part, when we read out the definition in respect to the sections, we should also cover the rules, right? Which will start from order rule 1, etc. One. Second, another aspect is when this particular law was created, initially the legislature makes the rules initially. But what is the difference between sections and the rules for the CPC? Anybody? Tell. Sir, sections define the substantive law, All right. and where rules defines the procedure, how to make them operative. How is it possible, Sunny, when the code is itself procedural in nature? But Code of- certain It's a code of certain civil sections procedure. are there. No. It's a code of procedure itself. Yes, sir. You can define your terminology like this. Basically, sections give you a broader outline of the powers and authorities and the process. Rules define it in a broader sense. Section is a narrow part, and the rule is a highlighted broader term in which how every small thing can be dealt with. One. Second, another aspect is sections are only the forte of legislature. Sections can only be made and amended by the legislature, but the rules can be amended by the concerned high courts too. Take it into account, right? The high courts have the jurisdiction to amend or make separate rules how the things will go in their jurisdiction. Let us assume that there is a suit or impediment. We talk about the impediment of something, impediment of a party, right? Order 1 rule 10 is there. Or jurisdiction, when we speak about the jurisdiction, pecuniary jurisdiction is there, a part of territorial jurisdiction. So high courts or may have the authority to make different rules for different jurisdiction of theirs. Assuming there is order 38, order 37, order, any order,
if a high court thinks that in our jurisdiction the way to work will not be sufficiently done by the already existing rule, we need to amend it, then the high court can do. But if high court thinks that an amendment is needed in a section, it cannot do. Right? Any questions? Why is it so? Because rules are basically second limb of an act. It simply signifies the broader terms how the work should be done, how we will be able to get our work done with a procedural law. Right? Now, section 2. Decree means the formal expression of an adjudication which, so far as regards the court expressing it, conclusively determines the right of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit, and may be either preliminary or final. It shall be deemed to include the rejection of a plant and the determination of any question within section 144, but shall not include any adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order, any order of dismissal for default. Dismissal for default. Dismissal for default. Explanation. But wait, don't go too fast. So first of all, this is not the way you should read a section. You all have to understand what is the way to read a section. The way to read a section is where the comma has been put. What are the major points in a section involved? When you are ready with your mind to understand a provision in a scenario that reflects the intention of the legislature, what actually the legislature want to cover with that section. Read it again, and I will stop you whenever it is needed. Decree means the formal expression of an adjudication Stop. This is the first point which you have to understand. What is decree? Decree means a formal adjudication, formal expression of an adjudication. Meaning thereby, in decree, before reaching to decree, there should be an adjudication. Right? किसी चीज का निर्णय हो जाना जरूरी है. तो निर्णय जब होगा तभी हम डिक्री तक पहुंचेंगे. अगर निर्णय नहीं हुआ तो कोई भी हमारा डिक्री तक पहुंचने का सवाल नहीं. So the first and foremost point which relates to decree is adjudication. Number 2, where it has been adjudicated, we should formally express it. We have done it. The judge has made an order. Judge has made up his mind that I will give this person this thing. But has passed his judgment, but does not specifically tell in terms what actually will be given to A or what actually should not be given to A, who is the plaintiff. Formally expression, meaning thereby साधारण शब्दों में बताए, वो फॉर्मली एक्सप्रेस करे कि मैंने निर्णय क्या किया. राइट? सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज एडजुडिकेशन. बगैर निर्णय के डिक्री नहीं होगी. नंबर 2, उसका फॉर्मल एक्सप्रेशन करना पड़ेगा. किसका फॉर्मल एक्सप्रेशन करना पड़ेगा? कंटिन्यू. आगे. So far as regards the court expressing it. Yes. So meaning thereby decree has only to do anything and everything with the court which is giving the judgment, जो इसे express कर रही है, जो बता रही है, जो adjudicate कर रही है, उसके respect में है. Next. Conclusively determines the right of the parties with regard to all or any of the matters in controversy. बस. In the रुको. अगला एस्पेक्ट डिक्री का क्या है कि कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन होना चाहिए. जिस मुद्दे को भी आपने छेड़ा, हो सकता है तुम्हारे सामने 4 मुद्दे हो कि मालिक कौन है, किसी ने कोई डॉक्यूमेंट किया नहीं किया, ए ने बी से कुछ कहा नहीं कहा, ए इसका अधिकारी है नहीं है, आपका बहुत सारे मैटर्स हो सकते हैं. लेकिन जिस भी मैटर की हम बात कर रहे हैं वो कंक्लूसिवली डिटरमाइन होना चाहिए. मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल, हो सकता है वीडियो 40 मिनट का होता है, बीच में ब्रेक हो जाए तो आई विल गिव यू अनदर वन बीच में. ठीक है, मैं जस्ट आई एम गिविंग हिंट. अगर एक व्यक्ति ए ने बी पे मुकदमा डाला कि बी ने फर्जी साइन करके एक सेल डीड बना ली है और मेरे घर को कब्जा लिया है, राइट?
और मेरा घर वापस दिला दो, उसने पोजेशन का सूट फाइल किया। यहाँ ए प्लेंटिफ था, बी डिफेंडेंट था। तो यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे हैं कि क्या वो फर्जी साइन थे, क्या ऐसी सेल डीड हुई थी नहीं हुई थी, घर उसका था भी था नहीं था, कब्जा है उसका कि नहीं है, कई सारे मुद्दे इन्वॉल्व है। तो फाइनली डिटरमाइन करना पड़ेगा आपको एक एक मुद्दे को, और जिस भी मुद्दे के बारे में आप डिक्री के बारे में बात करेंगे, एडजुडिकेट करने के बारे में बात करेंगे, उसको तभी अप्लाई कर पाएंगे एज ए डिक्री जब उसने कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन दिया हो। हाँ भाई, मैं पक्के तौर पर कहता हूं कि ए ने बी को कोई सेल डीड नहीं करी, बी ने फर्जी सिग्नेचर पाए, बी इसका मालिक नहीं है, बी इसका इलीगली कब्जे में है। Anything and everything will be conclusively determined, only then it will be called an adjudication, and when adjudication will be done and formally expressed, it will be called a decree. Continue further. And maybe either preliminary or final. Yes, that's the important aspect. Why they have used these two words, preliminary और final? अभी हमारे सवाल से ये जवाब आ जाएगा। अभी मैंने बताया ये जरूरी नहीं है कि जब डिक्री पास हो तो सारे मुद्दे खत्म हो गए हों, राइट? हो सकता है कि 4 मुद्दे थे, उसमें से एक मुद्दा खत्म हो गया, 2 मुद्दे खत्म हो गए, 3 मुद्दे खत्म हो गए, लेकिन सारे मुद्दे खत्म नहीं हुए। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे जो खत्म हो गए और अपने आप में इंडिपेंडेंटली खड़े रह सकते हैं, तो वो अपने आप में इंडिपेंडेंटली कंक्लूसिवली एडजुडिकेट हो सकते हैं, तो वहां पर पहले भी एक डिक्री बन सकती है, उसको हम प्रिलिमिनरी डिक्री कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि एनीबॉडी एग्जांपल टेल। सर जैसे लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में केस था और किराया देना, कितना देना है कितना नहीं देना, कुछ बड़े सारे इश्यूज थे, और ऐसा ये बात को एडमिट कर लिया गया कि वे टेनेंसी को, तो कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है। नो, यू आर गोइंग ऑन द रॉन्ग ट्रैक। हम 12(6) की बात नहीं कर रहे, हम एडमिशन की बात नहीं कर रहे, एडजुडिकेशन की बात कर रहे हैं, राइट? थोड़ा उदाहरण से, जैसे उदाहरण से समझने की बात है। मान लिया एक पार्टीशन का सूट था, राइट? एक आदमी आया, उसने मुकदमा डाला कि मेरे हम भाई 4 भाई बहन हैं और ये 2 दुकानें इसके कब्जे में, 2 दुकानें इसके कब्जे में है, लेकिन हम 4 भाई बहन हैं, मेरे बाप के मरने के बाद उसने कोई वसीयत छोड़ी नहीं, हमारा बराबर का हिस्सा है। एक बना, उसने 3 के खिलाफ मुकदमा डाल दिया और ये भी कह दिया मैंने मानी और कोई लीगल है। कोर्ट में आके बाकी सब लोगों ने मान लिया कि हाँ भाई ठीक है, हम भाई बहन तो हैं, लेकिन ये जो बात कह रहा है झूठी बात कह रहा है कि दुकानें इसके कब्जे में, मीन प्रॉफिट की बात है, या दुकानें मेरे कब्जे में है, या इसे देनी है उसे देनी है। तो कोर्ट ने प्रिलिमिनरी एक कोर्ट डिक्री पास कर सकती है इन रिस्पेक्ट टू शेयर्स कि हाँ भाई हिस्सा तय हो गया, सारे फर्स्ट लाइन हियर हैं, सबको 1/4 1/4 1/4 मिलना है, तो प्रिलिमिनरी डिक्री पास की जाती है कि जो प्रॉपर्टी है उसे 1/4 हिस्सों में बांटने का अधिकार है, राइट? दिस इज कॉल्ड द प्रिलिमिनरी डिक्री। फिर जब उसके बाद आ गया दूसरा फाइनल, फाइनलिटी जब वो अटेन कर लेगी तो फाइनल डिग्री, राइट? आगे पढ़ो। It shall be deemed to include the rejection of a plaint and the determination of any question within section 144. बस यहीं रुक जाओ। अब वो लेजिस्लेचर इतनी समझदार थी, उन्हें पता था कि भाई दिक्कतें हो सकती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां क्लियर कट एडजुडिकेशन नहीं होता, जहां एडजुडिकेशन राइट का नहीं होता, फाइनल डिटर्मिनेशन कोर्ट मेरिट पे नहीं करती। फिर भी हमने, चूंकि आगे जाके जब हम पढ़ेंगे अपीलेबल ऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे, तो हमें पता चलेगा कुछ चीजें ऐसी थी जहां की अपील हो रही है और डिक्री वो है नहीं, तो उसको कवर किया उन्होंने। उसमें से जैसे एक उदाहरण था रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का, राइट? ऑर्डर 7 रूल 11। तो उन्होंने उसके लिए वर्ड यूज किया क्या? डीम्ड डिग्री। क्यों? क्योंकि डिग्री की पहली कंडीशन थी कि एडजुडिकेशन होना चाहिए, और 7/11 में जो हमने रिजेक्ट कर दिया, मेरिट पे कुछ किया नहीं, एक व्यक्ति लिमिटेशन से बाहर था, उसका मुकदमा आ गया, कोर्ट ने देखा रे तेरा मुकदमा तो बनता ही नहीं भाई, या रेस जुडिकेटा से बाहर था, पहले ही मुकदमा हो चुका, तेरा तो बनता नहीं है मुकदमा, या किसी कानून से बाहर है कि डीआरसी एक्ट में तेरे को जाना था, तू यहां मुकदमा लेके आ गया, सिविल सूट फाइल कर दिया तूने, राइट? तो कोर्ट ने क्या किया? उसके प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया, राइट? अब मेरिट पे तो उसने कोई निर्णय दिया नहीं, ना ये बताया कि उसका वो मालिक था, ना ये बताया कि टीनेंट से उसे कुछ ले सकता था नहीं ले सकता था, ना ये बताया कि हाँ भाई उसका अधिकार था नहीं था। उसने केवल और केवल किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो लीगली बार था उससे
डिटरमाइन करते हुए रिजेक्ट कर दिया। या 711 में और बहुत सारे प्रोविजन से, मान लो कोर्ट फीस का ऑर्डर करा कोर्ट ने उसने मैं तो ना देता भाई, दी नहीं उसने, राइट। तो ऐसी स्थिति में जो हमारी डिक्री की पहली परिभाषा थी वो ये थी कि फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए उसके एडजुडिकेशन का, वो तो हुआ नहीं है, तो उसे डिक्री की जगह, लेकिन चूंकि उसे हम कहीं ना कहीं अधिकार दे रहे थे अपीलेबल, तो उसको मान लिया गया। डी माने जहां हम मान लेते किसी चीज को, हालांकि वो डिक्री की सारी शर्तों को पूरा नहीं करता जो कि होनी चाहिए थी, लेकिन हम उसको डिक्री के पैरेलल रख रहे थे, इसलिए हम उसे मान लिया कि हाँ ये डिक्री है। तो इसीलिए वर्ड यहां पर आया डीम्ड डिक्री, राइट। इससे ऊपर वालों में तो नहीं आया था ना, पूरी परिभाषा में नीचे आया। इसके बाद एक आता है वर्ड सेक्शन 144। सेक्शन 144 हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पर मोटा समझ लो व्हाट इज सेक्शन 144 इन दिस राइट। सेक्शन 144 बात करता है रेस्टिट्यूशन की। व्हाट इज रेस्टिट्यूशन? सेविंग, बेसिकली सेविंग someone's right. हाँ, No, restitution is gaining something which you have lost earlier. So restitution. काफी हद तक ठीक, सही वर्ड, हाँ सही वर्डों का इस्तेमाल करो। रेस्टिट्यूशन मीन्स टू प्लेस समवन एट द सेम पॉइंट फ्रॉम वेयर ही हैज ट्रेवल्ड ड्यू टू सम ऑर्डर विच शुड नॉट हैव बीन पास्ड। जब किसी व्यक्ति को का कोई अधिकार जहां वो खड़ा था वहां से उसे डेविएशन हो गया किसी आदेश के कारण, किसी परिस्थिति के कारण, उसको उसी जगह लाके खड़ा करना, यानी कि जहां से वो चला था वहीं पहुंचा देना। उसका जो नुकसान हुआ, जो घाटा हुआ, जो उसे समस्या हुई, वो वहीं से रीएस्टैब्लिश कर देना उस अधिकार को, दैट इज कॉल्ड रेस्टिट्यूशन, राइट। तो रेस्टिट्यूशन के मामले में भी उन्होंने कह दिया कि भाई हम इस तरीके से उसे डिक्री मान लेंगे। ऑलराइट, सो नेक्स्ट पढ़ो आगे। But shall not include यस, वेट adjudication. वेट, तो ऊपर की जो डिक्री की परिभाषा थी वो परिभाषा थी अनेबलिंग, अब इसके बाकी की है डिसेबलिंग। मतलब कि अब नीचे के जो हम बता रहे हैं कि भैया वो डिक्री नहीं होगा चाहे उसमें एडजुडिकेशन भी हो रहा हो। क्या कहता है वो? Shall not include any adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order. अभी समझ आया? यस, अभी हमने बात की थी कि हर एडजुडिकेशन को डिक्री नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि एडजुडिकेशन अगर केवल आदेश की परिभाषा में आता है, जैसे उदाहरण के तौर पर हमने एक इंटरिम ऑर्डर पास करा, राइट। क्या एक आदमी गया कोर्ट में मुकदमा फाइल किया कि सनी जी मुझे बड़ा परेशान कर रहे हैं, भाई मुझे इंटरिमली प्रोटेक्ट कर दो। कोर्ट ने कह दिया हाँ जी सनी जी बहुत खाते पीते इंसान है, ताकतवर आदमी, बहुत पैसे वाले हैं, परेशान कर सकते हैं, अभी ये जो परेशान नहीं करेंगे विपिन को, राइट, फॉर द टाइम बिंग। तो ये भी एडजुडिकेशन है, प्राइमरी एडजुडिकेट तो किया, लेकिन ये ऑर्डर की फॉर्म में किया और वो उसकी अपील भी फाइल करते हैं, लेकिन उसको डिक्री नहीं माना जाएगा। मियरली इस वजह से कि एडजुडिकेशन है, मियरली इस वजह से कि अपीलेबल है, मियरली इस वजह से ऑर्डर है। स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया हमने डिक्री की परिभाषा से। आगे Any order of dismissal for default. हाँ, उन्होंने कहा कि डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट हो गया, किसी भी स्टेज पे अगर हो गया तो इसको हमने फिर वापस वही किया, क्योंकि डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट जो होगा वहां भी कोर्ट अपना कोई व्यू नहीं दे रही कि मेरिट पे किसी का कोई राइट बनता था या नहीं बनता था, राइट। सो वहां भी वो डिक्री नहीं होगा। आगे पढ़ो, एक्सप्लेनेशन। Explanation. A decree is preliminary when further proceedings have to be taken before the suit can be completely disposed of. Yes. Wait. So meaning दिया भाई इन्होंने, अब देखो ऊपर आया था डिक्री में, लेजिस्लेचर कितनी समझदार है, कितनी चालाक है। उन्होंने ऊपर आया वर्ड प्रिलिमिनरी कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, आगे जाके कोई वकालत करेगा नहीं करेगा, समझेगा कैसे समझेगा, तो प्रिलिमिनरी को उन्होंने समझा दिया कि प्रिलिमिनरी डिक्री वो डिक्री है कि भाई जिसके पास होने के बावजूद भी, जैसा भी हमने उदाहरण दिया था आपको कैसा, शेयर वाला, पास होने के बावजूद भी उसी कोर्ट को उसी प्रोसीडिंग में, उसी मुकदमेबाजी में कुछ करने के लिए रह जाए, देयर इज समथिंग लेफ्ट still to be adjudicated, then the decree which has already been passed is a preliminary in nature, it is not final. Final degree का मतलब यह है कि कोर्ट अब कुछ और करना नहीं है, कोर्ट को उस मुकदमे में जो करना था वो सब कुछ कर चुकी है। The court will become functus officio except for some exceptions, वो हम बाद में जाएंगे 151 की 152 की जो बातें आएंगी
कि भाई करेक्शंस ठीक करना, ये करना, वो करना, या रिस्टोर करना कुछ राइट्स को। उसके अलावा फाइनल डिक्री के बाद कोर्ट जो है क्या हो जाएगी, फंक्शंस ऑफिशियो हो जाएगी। लेकिन प्रिलिमिनरी डिग्री के बाद, इसीलिए प्रिलिमिनरी डिग्री हम उससे कह रहे हैं कि उसी मुकदमे में, उसी प्रोसीडिंग में कोर्ट के पास कुछ और करने के लिए भी रह जाता है। आगे, It is final when such adjudication completely disposes of the suit. बस उसका जवाब मैंने आपको पहले ही दे दिया, राइट। It may be partly preliminary and partly final. हाँ, सो अभी हमने जैसे आपको जवाब दिया कि पार्टली प्रीमिनरी पार्टली फाइनल कैसे। मान लीजिए एक पार्टीशन के सूट में जब हमने शेयर डिटरमाइन कर दिए किसी व्यक्ति के कि हाँ भाई सबको मिलेगा 1/4, तो उतना जहां तक हिस्से का सवाल था वो फाइनल है, वो नहीं बदलेगा। आप उसकी अपील लाई करो, कहीं जाओ, ऊपर जाओ, प्रीलिमिनरी डिग्री की अपील चैलेंज करो, क्या करोगे पता नहीं। लेकिन उस कोर्ट के लिए ये बात फाइनल हो गई कि भैया 4 आदमी आए थे मेरे पास, एक व्यक्ति था प्लेंटिफ, 3 डिफेंडेंट थे, अब इन चारों का 1/4 1/4 1/4 हिस्सा बनता है। तो फॉर दैट पर्पस द कोर्ट हैज सीज्ड टू ऑपरेट एंड द decree which is preliminary in nature has become final as far as the share is concerned, right? So today we will not take much of the lecture ahead because it was the first one. We will conclude. अब queries और questions, हालांकि मेरा इरादा था कि आज हम सेक्शन 5 तक पहुंचते, लेकिन आज हम विराम देंगे इस मुद्दे को। अब आप लोग अपनी क्वेरी पूछो, हाथ के हाथ अगर कुछ पूछना चाहते हो तो, कुछ कंफ्यूजन, वन बाय वन बाय रेजिंग द हैंड्स। I have a query. कि जो order 12 rule 6 का जो order होता है, so that is not a preliminary decree because that can be challenged. चैलेंज से डिक्री का कोई मतलब नहीं होता। डिक्री तो हर कोई चैलेंज हो सकती है, एवरी डिक्री चैलेंजेबल। तो जो 12/6 में अगर ऑर्डर हो गया कि एविक्शन के लिए ऑर्डर हो गया सपोज टेनेंट का कि मतलब एस्टैब्लिश्ड हो गया फैक्ट, सो दैट इज डिक्री और दैट इज नॉट अ डिक्री, दैट ऑर्डर। लिसन 12/6 को 12/6 क्या है? एडमिशन, व्हेन देयर इज सम एडमिशन। पढ़ो ऑर्डर 12 रूल 6 पढ़ो, पढ़ के बोलो व्हाट इज ऑर्डर। सबसे पहले तो आप लोगों को आप निकाल लो। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ऑर्डर है वो अपने आप में, यानी कि मीनिंग देयर बाई इट इज ओनली एनहेंसिंग, इट इज ओनली गिविंग something which is not available in sections or which has not been happily worded in sections or which has not been covered in much of the words. So order 12 rule 6, what is order 12, right? First read the title order 12. Judgment on admissions. Yes. What did it say? The title itself makes it very clear that the judgment can be passed on an admission. And when there is a judgment, it is a final adjudication. And when it is a final adjudication, it is a decree. So no question remains. Because for every degree, there should be a judgment. Without judgment, there cannot be degree. Because what do you mean by judgment? Judgment means when the judge applies his mind and decides the issue before him. That is the judgment. It may not be confused by the order. In the order, similarly things are done. Judge applies his mind, he gives an order, he tells that something is to be done or something is not to be done, but they are to be separately dealt as far as for the purpose of right to appeal are concerned. ऊपर अभी आपने पढ़ा ना, दिया हुआ था कि ऑर्डर अपीलेबल हो तो भी डिक्री नहीं मान लिए जाएंगे, पढ़ा, इसीलिए डिक्री में उन्होंने अलग किया, right? Because the orders can come in between. Many orders can come in between. The order can be interim, order can be interlocutory, order can be ad interim, but the decree is not such. Decree is only of two nature, preliminary and final, and preliminary will be only in some specific cases. In every case there will not be a preliminary decree, right? ऐसा नहीं है कि जैसे किसी भी मुकदमे में एक इशू आया, इसीलिए लॉ जब आप लोग आगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा आपको कि इसी पे कंफ्यूजन यूजुअली होता था कि प्रिलिमिनरी इशू और फाइनल इशू बनने लगते थे। कई बार बहुत सारी कोर्ट्स में कोर्ट क्या करती थी, प्रिलिमिनरी इशू ट्रीट करने लगी किसी बात को। मान लीजिए एक व्यक्ति गया एक बात कहते हुए कि भाई मैं इस चीज का लैंडलॉर्ड हूं, राइट, और ये व्यक्ति जो है मेरा टेनेंट है और ये इतना रुपए का किराया लेता है, मुझे इससे 2500 रुपया लेना है किराया।
या मुझे 3600 रुपए किराया लेता हूं। डिफेंडेंट आया, डिफेंडेंट आके कहा नहीं भाई मेरा किराया तो 2000 रुपए है, राइट। कोर्ट ने प्रिलिमिनरी इशू बना दिया रेंट का, राइट, और कह दिया, फिर रेंट पे एविडेंस ले ली, एविडेंस आ गई इस इफेक्ट की 2500 रुपए की है केवल, राइट। कोर्ट ने कहा कि भाई अब तो मेरा जुडिक्शन नहीं बनता, मैं तो मुकदमा डिसमिस करूंगा। कोर्ट कैन नॉट डू सो, बट 12(6) में क्या है, एडमिशन है। एक आदमी ने मुकदमा फाइल किया, कोई मुकदमा करने गया, मुकदमे कहा जी ये मेरा टीनेंट है और इस आदमी 3600 रुपया लेने हैं मेरे को। सामने वाला कहा हाँ जी 3600 रुपए तो मेरे को किराए देने हैं, लेकिन मेरा जो है किराया अगले महीने से 3600 रुपए होना था। उसने वो सूट विड्रॉ कर लिया और इन बिटवीन उसने 3600 रुपए किराया भी दे दिया। वो अगली बार चला गया उसी बेसिस पे, और वो गया, उसने देखो जी इसने एडमिशन किया था, और दूसरी प्रोसीडिंग्स में 12(6) इस प्रोसीडिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान रखना। दूसरी प्रोसीडिंग्स उसने चालू हुई, इसने एडमिशन किया था कि 3600 किराया, अब ये किराया इसने 3600 हो भी गया है, और 3 महीने से, पिछले 3 महीने से इसने किराया दिया, अब मैं रेंट एरियर्स के बेसिस पे आया हूँ। डब्ल्यूएस में उसने ये बात मान ली कि हाँ जी मैंने ये डब्ल्यूएस पहले फाइल किया था, 3600 रुपए किराया था, मैंने 3600 रुपए किराया दिया भी है, तो ये एडमिशन के बेसिस पे डिक्री हो जाएगी, राइट, कि अब उसका किराया 3600 रुपए है, यानी कि वो डेली जो आपका डीआरसी एक्ट है उससे प्रोटेक्टेड नहीं है। चूंकि वो डीआरसी एक्ट से प्रोटेक्टेड नहीं है और 3 महीने से एरियर दिए और उसकी और कोई डिफेंस नहीं है, तो वो इविक्शन का सूट 106 का नोटिस दे दिया, इसलिए उसे इविक्शन किया जा सकता है। सो द योर क्वेश्चन वाज मिसप्लेस्ड। 12(6) doesn't speak about decree. 12(6) speaks about consequence of a admission which can culminate into a decree. Can you get my point? एक व्यक्ति ने एक स्वीकारोक्ति दी और माना कि हाँ जी जो प्लेंटिफ ने कहा है वो सच है, उसके बेसिस पे कोर्ट ने एडमिशन के बेसिस पे जजमेंट किया, जजमेंट अल्टीमेटली एक डिक्री में कन्वर्ट होगा, राइट। एनी अदर थिंग सर? सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे वो एडमिशन है, एडमिशन दूसरे केस में होगा और वो एडमिट दूसरे केस में होगा, मतलब सेम केस में नहीं है। आपने ध्यान नहीं सुना मेरी बात। एडमिशन पे डिक्री तो उसी केस के एडमिशन पे होगी, वो भी अनइक्विवोकल होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिकली अपने आप में पूरी तरीके से क्लियर कट अनएम्बिगुअस एडमिशन होना चाहिए उसी केस में, दूसरे केस में नहीं। मैंने आपको बताया था कि दूसरे केस में, पहले केस में उसने माना कि हाँ जी 3600 रुपए मेरा किराया होना है, लेकिन अगले महीने से दूंगा, ठीक। फिर वो 3600 रुपए किराया देने लगा, फिर जब दोबारा उसने मुकदमा फाइल किया तब उसने माना कि हाँ जी आज मेरा 3600 रुपए, और मैंने उस केस में भी माना था। तो एडमिशन 12(6) के रिगार्डिंग 12(6) के रिगार्डिंग एडमिशन उसी प्रोसीडिंग में होना चाहिए जिसके मुकदमे की हम अब चल रहा है, जिसमें जजमेंट होना है, दूसरे में नहीं। दूसरे में तो आपको साबित करना पड़ेगा, राइट। अब आएगा स्टेटमेंट की बात। अब स्टेटमेंट फिर हम ये, जब आप एविडेंस एक्ट पढ़ोगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि भाई स्टेटमेंट, पहले प्रीवियस स्टेटमेंट कैसे एडमिसिबल है कैसे नहीं है, वो हम अभी नहीं छेड़ रहे, यू विल गेट कंफ्यूज्ड। हाँ, एनी अदर थिंग? हाँ सनी। सब प्रीलिमिनरी डिक्री जो होगी उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए फिर से ऑर्डर 21 में जाना पड़ेगा। हाँ, इट कैन बी एग्जीक्यूटेड एज वेल। कोई भी डिक्री, जैसी हमने डिक्री कही उसको एग्जीक्यूट, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि एग्जीक्यूटेबिलिटी, हाँ देखना ये पड़ेगा कि एग्जीक्यूटेबिलिटी है क्या उस डिक्री की। मान लीजिए जैसे कि अभी आपने कहा कि शेयर की बात है, जब शेयर तो हमने डिटरमाइन कर दिया, लेकिन दिक्कत अब इसमें यह है कि शेयर में 4 आदमी बैठे हुए हैं, तो ये हमेशा केस पे केस डिपेंड करेगा कि वो क्या राइट कन्फर किया गया है। और प्रिलिमिनरी डिग्री भी वैसे ही एग्जीक्यूटेबल है जैसे कि आपकी, जैसे हमने डिग्री कहा वो एग्जीक्यूटेबल है, उसमें कहीं प्रिलिमिनरी और फाइनल की अपने आप में कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर नहीं भी कराई तो फाइनल के साथ भी आप उसे एज इट इज करा सकते हैं। एनी अदर थिंग? और कोई संशय आज के लिए? नहीं, ठीक है। सो अब आप लोग, सब लोगों के पास मेरी जो मेल आईडी है ये वाली, जिस पर कि हम काम कर रहे हैं, राइट, वो उससे, जिससे आप लोगों को इनवाइट भेजा गया, उसी पर अपनी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर भी आप लोग अपनी क्वेरीज को रख सकते हो, जिसमें मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है। ओके सर। आज के लिए
हम यही रोकते हैं. We will most likely continuing in this fashion every day at 8, subject to other exceptions. कोई और स्थिति हो 8 से 9, and we will be a little ahead tomorrow or day after tomorrow, because initially we were discussing a few things which were not required. हमें CPC क्या है क्या नहीं है, तो हम we will more or less concentrate on our basic acts first. इसके अलावा आप लोग जो भी अपना पढ़ेंगे, 5 मिनट का सेशन आज तो नहीं है, और कल से मैं 5 मिनट का सेशन, 7 मिनट का सेशन, CPC के अलावा भी अगर कुछ और आप पढ़ते हैं और कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं. ठीक है, बी इट प्रोफेशनल और एकेडमिक, राइट? चलो, गुड नाइट. Okay, you. thanks. ओके, Thank you, sir. Good night, Good night. गुड Thank नाइट, you. बाय बाय, Good night. गुड नाइट.